ये पढ़ लिया। हाँ ये हमने कर लिया था। हम्म। अच्छा, कोवलेंट कैरेक्टर हमने पढ़ा था कि कोवेलेंट कैरेक्टर होता है कि यू गॉट लेस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन होते इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो, ठीक है, नॉन मेटल्स होते हैं, दे वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट दे बोथ इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में होते हैं तो व्हाट हैपेंस इज यू गेट सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स एंड फिर हमने वो पढ़ा था कि so they form simple covalent molecules with weak intermolecular forces between them. और properties ये थी कि they're going to have low melting points, boiling points, no electric conduction, and their solubility would depend on intermolecular forces, ठीक है। और फिर हमने एक चीज पढ़ी थी which is that I explained कि भाई octet rule जो होता है ना, that is only limited to shell number 2. Shell number 2 atoms can have a maximum of 8 electrons, that's it. So oxygen will have it's going to share 2 electrons, that's it. लेकिन सल्फर का मैंने कहा था कि सल्फर जो शेल नंबर 3 है ना, दैट कैन अकोमोडेट कितने इलेक्ट्रॉन्स, दैट कैन अकोमोडेट 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, शेल नंबर 3। सो इफ इट कैन अकोमोडेट 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो इट डजंट रियली हैव एन अपर लिमिट, ठीक है, इट कैन मेक एज मेनी बॉन्ड्स एज पॉसिबल। Sulfur can share all its 6 electrons. Even then, if it shares all its 6 electrons, उसका जो आउटर शेल है, इट्स ओनली गोइंग टू गेट 12 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल स्टिल नॉट गेट 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो वो मैंने कहा था कि शेल नंबर 3 एंड बियॉन्ड देयर इज नो अपर लिमिट, ठीक है। नाइट्रोजन के ऊपर लिमिटेशन है, पीरियड 2 कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। Phosphorus, there's no upper limitation. It can make as many bonds as possible, so it can possibly share all its 5 electrons, ठीक है। So it can make 5 bonds. वही मैंने एग्जांपल दिया था सीएल का, Cl can share all its 7 electrons, and even then its outer shell will not be complete, ठीक है। तो ये बात क्लियर है, ये जो हमने लास्ट टाइम की थी, इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है। सो अच्छा, थोड़ा सा डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, एंड आई एम जस्ट टेकिंग टू पीरियड 2 एलिमेंट्स, दैट्स इट। क्योंकि ऑक्टेट रूल जो है ना, दैट इज ओनली ओबेड बाय पीरियड 2 एलिमेंट्स, ठीक है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टिक टू पीरियड 2 एलिमेंट्स। अब इसमें ये कि पीरियड 2 में कि when you have period 2 elements, what happens is कि इधर मैं एलिमेंट्स लिख देता हूँ कि ग्रुप 4 हैज कार्बन इन इट, 5 हैज नाइट्रोजन इन इट, 6 हैज ऑक्सीजन इन इट, एंड 7 हैज फ्लोरीन इन इट, ठीक है। इवन क्लोरीन टू इन अ लॉट ऑफ केसेस डज मेक वन बॉन्ड, ठीक है। लेकिन क्लोरीन के लिए ना, देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सेप्शंस, इट कैन मेक वे मोर देन वन बॉन्ड, ठीक है। इट कैन मेक एज मेनी बॉन्ड्स एज पॉसिबल। तो ये याद रखना है कि you should be familiar with structural formulas and converting them to dot and cross diagrams. So if I have a molecule like carbon, so that carbon would be bonded to, it should be making 4 bonds. ठीक है, so that is an ethane molecule, right? Is that clear? ये clear है? जी सर। अच्छा, and if somebody is going to ask you to draw the dot and cross diagram, so it's going to look like this. So the dot and cross diagram will look अच्छा, it's going to look because you should know how to make basic dot and cross diagrams. Just basic, ये मैं ज्यादा नहीं करूंगा, it's just very basic.
ठीक है, so you've got carbon sharing electrons. अच्छा, you've got carbon sharing electrons, that's it. तो pre-drawing cross diagram, is that clear? NH3 का molecule कैसा होगा? It's going to be N is group 5, so it makes 3 bonds. So it's going to make 3 bonds with H's. So you should know how to draw the drawing cross diagram for this. I said directly, they're not going to ask you a lot of drawing cross diagram questions, ठीक है? तो बस basic level का you should have some idea. Structural formulas हैं वो detail में ना, we're going to do that in organic chemistry as well. अच्छा, ये हो गया. H and there's another H. ठीक है, so you've got और N के अंदर 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे. एक सेकंड. अच्छा, ये हो गया. 5 में से 2 electrons in its outer shell will be left. अच्छा, dotting cross diagrams clear है? Is this clear? जी सर. तो इस तरह हम ढेर सारे बना सकते हो, ठीक है? No one is really going to ask you to draw them right now, ठीक है? But you should know कि who makes how many bonds, ठीक है? If I draw an HCN molecule, तो C makes 4 bonds, N makes 3 bonds, so and C will make the 4th bond with H, ठीक है? So that's what HCN would look like. उसका dotting cross diagram क्या होगा? It's going to be, you got carbon in the middle, and you're going to have N on one side. Okay, so there is N on one side, and there is H on the other side. Okay, there is इसको shaded कर लेते हैं. C is group 4, so it makes 4 bonds, so all its electrons are used up. N is group 5, makes 3 bonds, so that means out of 5, 2 electrons are left. Okay, that's what an HCN molecule would look like. ठीक है, start off with the structural formula and then you can, अगर कोई कहता है आपको ये molecule है HNCO, how would that molecule look like? How would the dotting cross diagram look like? So it's gonna, you should know K. H makes 1 bond. Now you've got N and C and O, right? C makes 4 bonds. So let's say it makes 2 bonds over here, 2 over here. So C is supposed to make 4. So it is making 4. Oxygen is group 6, so it's supposed to make how many bonds? It's supposed to make 2 bonds. और वो जो आपका N है ना, it's supposed to group 5 makes 3 bonds. So it is making 3 bonds. So that kind of completes your, it kind of completes your structural formula, ठीक है? ये clear है HNCO? And you can then translate that into your dot and cross diagram. Okay, but you've got an H. अच्छा, साथ एक N है. अच्छा, उसके साथ there's a C. अच्छा, and then you have an O.
and you just follow it. Okay, H and N, they form a single bond, so that's one electron each. N and C, they form a double bond. तो एक को शेड कर लेते हैं. अच्छा, then C and O also form a double bond. उसका symbol change कर लो. Let's say I've got color change कर लेते हैं. So double bonds. So that's O. O will have O was in group 6. It makes two bonds, so that means 4 electrons are left. That's 1, 2, 3, 4. C is group 4, and it makes 4 bonds. Nothing is left. N is group 5. Group 5 makes 3 bonds, so that means 2 electrons are going to be left. ठीक है? So you clear that this is an HNCO diagram. Is that clear? Clear है? Yes or no? Is this clear? Yusuf clear है? बाकियों को clear है? Yes, sir. ठीक है. एक दो थोड़ा सा और कर लेते हैं. H2O2. How would H2O2 look like? Hydrogen peroxide. Oxygen कितने bonds बनाता है? Oxygen makes 2 bonds, right? So oxygen makes 2 bonds. So I have oxygens and I have H's. Now H makes only 1 bond. That's it. H makes 1 bond. Oxygen के साथ, ठीक है, that's it. Oxygen makes 2 bonds, so they're probably making a bond with each other. So oxygen has made 2 bonds. This oxygen is also making 2 bonds. H is making 1 bond, and this H is also making 1 bond. So bas complete ho gaya. That's it. That's everyone is making the right number of bonds. So वो फिर जोड़ते जाओ. Okay, 2 oxygens and H को छोटा कर लेते हैं. 2 H's. So 2 oxygens and 2 H's. ठीक है. Dotting cross single bond है सारे. So this would also be dot dot हो जाएगा. ठीक है. This is dot in cross. Oxygen is group 6, makes 2 bonds, so that means 4 electrons are left. This oxygen also 4 electrons are left. So clear it by just remember, ये जो octet rule है, that only applies to period 2 elements. अगर sulfur होता ना, तो you're not really sure how many bonds it's going to make. So, but is this clear? ये clear है सारों को? Yes, sir. ठीक है. अब इससे आगे ये कि अच्छा, इससे आगे ये कि you'll be given structures like these, right? So these are molecules, small molecules, right? And I told you that these small molecules, उनकी properties क्या थी? They're going to have intermolecular forces. Like, you need to know a lot of stuff other than this about these small molecules. Starting with the first thing, you should know the shape of these molecules. मैं साइड पे आ जाता हूँ. ये मैं किधर चला गया एक बोर्ड में. So let's stay on that side. 1 second. So now things are going to get slightly more complicated about these molecules. You should know the shapes of these molecules. So what's the shape of a molecule? So remember, this is not how the molecule actually looks like. ठीक है? This is not what the molecule looks like. ये जो मेरे पास ये वाला molecule है ना, ethane for example.
This is now not how ethane actually looks like in the real world. जैसा अगर मैं इसका मॉडल दिखाऊं ना, that's now how it looks like. ethane का जो molecular model है ना, that's something like this. है वही, लेकिन हम जब लिखते हैं ना, when we write it on the board, so it's something like this. बल्कि इसमें इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा, ये वाला. अच्छा, so ethane looks like this. This is the three dimensional representation of ethane. Okay, there's a carbon atom and it's bonded to CHs. There's a carbon atom and it's bonded to three Hs. So it's a three-dimensional shape. It's not a two-dimensional shape. तो ये जो हम sketch करते हैं ना, this is what how we show ethane is. That's not exactly correct. That's not what it actually looks like. ठीक है? तो अब इनकी actual shapes वगैरह, okay, how these molecules are going to look like and what determines their shape. So the shapes of molecules. Now the shape of a molecule is determined by a thing called the valence shell, electron pair, repulsion theory. ठीक है, which is also known as VSEPR. Achha, it's also known as VSEPR. That's valence shell electron pair repulsion theory. What happens in this is, or what the theory states is, if I have a molecule, uh, like I have a molecule of AlCl3, it's a covalent molecule where aluminium ends up sharing 3 electrons with 3 other Cl atoms, right? So what the theory states is that the electrons will try to be as far away from each other, the bonded electrons, in three-dimensional space. They're going to try to be as far away from each other as possible. यानी ये वाले electrons जो है ना, and these electrons over here and these electrons over here, they will all repel each other. So these electrons will repel each other. These electrons are going to repel each other, and these electrons will also repel each other. So they'll try to be as far away from each other as possible. ठीक है? And that's what valence electron pair repulsion theory is, that the electrons will try to be as far away from each other as possible. ठीक है? So for example, if I have a CH4 molecule, so AlCl3 की जो shape होती है, it looks like a fan. Because if you look at the blades of the fan, three-dimensional space में ना, it's the blades of the fan are as far away from each other as possible. So every atom has a different number of bonded electrons. And it's not just bonded electrons. A lot of atoms have lone pairs as well. This is a sulfur dioxide. Sulfur dioxide has a double bond and it's got two double bonds. अच्छा, अब सल्फर जो है ना वो ग्रुप 6 में है. Group 6 means that it's making how many bonds? It's making 4 bonds at the moment. एक सेकंड देना, चार्जिंग लगा लो. अच्छा, सल्फर वापस आते हैं. Sulfur is group 6, so it's making two double bonds. That means it's sharing 4 electrons. So out of 6 electrons, it's sharing 4 electrons. So that means in its outer shell, there are 2 electrons that are still left, right? That's known as a lone pair. ठीक है, जो हमने ऊपर molecules draw किए थे ना, these electrons are known as bonded pairs. And these electrons over here are known as
lone pairs. ठीक है, so you've got two types of electrons. You in the outer shell, there'll be electrons that will be bonded, and they're going to be electrons which will be not bonded to anything. So these are electrons, these all electrons are repelling each other. They're going to be as far away from each other as possible. अच्छा, sulfur के case में what happens is that it's got a double bond and it's got another double bond, so it's got electrons over here. ठीक है, यहाँ पे electrons हैं. It's got electrons over here. Plus, it's got these electrons which are not doing anything in the outer shell, and they all repel each other. So it's going to stay. I mean, all of them are going to be staying as far away from each other as possible. ठीक है, in the three-dimensional space. So the idea clear है कि the bonds and the lone pairs in the outer shell, they try to be as far away from each other as possible. Is that clear? Yes, sir. ठीक है, सारों को क्लियर है. अच्छा, तो Yes, वन. sir. Yes. अच्छा, अब इसके ना हमने सारे सिनेरियोस, क्योंकि अब ये याद करना भी मुश्किल है. You have to remember all scenarios, starting with the first one. Scenario number one. ठीक है, scenario number one is, what if a molecule has just two bonded pairs? So what would be the shape of the molecule? So there are many molecules that just have two bonds. For example, beryllium bonded to chlorine, or even carbon dioxide. ठीक है, it's got a double bond on one side. I said, remember, I'm going to take a double bond as one bonded pair, because all the electrons are together. So I'm going to think of it as two bonded pairs. So you got a bunch of electrons over here, you got a bonded pair over here, and you got bonded pairs over here, right? Beryllium chloride, you got a bunch of electrons over here, and you got a bunch of electrons on this side. I said there are no lone pairs. Because beryllium is in group 2, so it makes one bond here, one bond here. There's nothing left. Carbon is group 4, makes two bonds over here, two over here. So there's no further electrons left. And there are other molecules as well which have two bonded pairs. For example, HCN. Achha, HCN, that's also two bonded pairs. It's you got a bonded pair on this side, a triple bond, and you got a bonded pair on this side, right? And carbon has nothing left. Now, when you just have two bonded pairs, they're going to try and stay as far away from each other in this space, in the three-dimensional space. So that means if one bond is on the right side, the other bond is going to be on the extreme left. So the bond angle is going to be what? It's going to be 180 degree, and the shape is going to be called linear. Okay, this is called a linear shape. So yeah. So it's called a linear shape. You clear है two bonded pairs? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल देखोगे ना, अगर जाके कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर मॉडल, वो स्ट्रेट होगा. ठीक है, so that's it. Exactly 180. One bond over here, one bond on the other side. So ये पहला scenario. Second one. That's the second one is, what if you have three bonded pairs? वो भी हम कर भी चुके हैं वैसे. वो AlCl3 वाला. ठीक है, so that's fan shape. ठीक है, like your fan. One bond on top, Cl. All the bonds are going to be as far away from each other as possible. ठीक है, and there's a Cl over here. Three bonded pairs. They're going to try and stay as far away from each other as possible. Angles क्या होंगे इसमें? 120 degrees. 120 degrees होता है एंगल. ठीक है, और इसका जो टेक्निकल नेम है ना फैन शेप का, दैट्स ट्राइगोनल प्लेनर. ठीक है, एक और मॉलिक्यूल, सल्फर ट्राइऑक्साइड. सल्फर ट्राइऑक्साइड इज आल्सो, इट्स गॉट थ्री बॉन्डेड पेयर्स. ठीक है, डबल बॉन्ड
another double bond, and another double bond. ठीक है? It won't have any lone pairs because sulfur is group 6. Two bonds over there, two over here, two over here, so there's nothing left. So ये भी, this is also going to be exactly the same. It's going to be trigonal, planar, and fan shaped. ठीक है? तो इसको कर लेते हैं 2 part A. कि 3 bonded pairs, that's the shape. इसमें एक चीज मैंने नहीं बताई कि I told you कि इसमें वो मैं ऐड कर देता हूँ bonded pairs. Remember, lone pairs जो होते हैं ना, they exert the greatest repulsion. They have the strongest repulsion, followed by bonded pairs. ठीक है? They lone pairs are going to exert more repulsion. Bonded pairs are going to exert less repulsion. उसकी रीजन है, वो रीजन ये है कि ये जो लोन पेयर है ना over here, this is very, no one is attracted to it. This is very close to the atom. जो bonded pairs है ना, they're being shared by the other atom as well. तो वो थोड़े दूर चले जाते हैं. So bonded pairs are like really far away because they are stretched. The other atom is pulling those electrons or sharing those electrons. So the bonded electrons are like slightly further away, which is why they won't exert that much repulsion as much as a lone pair. ठीक है? Remember, lone pair जो है ना is much closer to the atom. So that exerts a much greater repulsion. ये बात भी clear है कि lone pair की repulsion bonded pair से ज्यादा होगी. Is that clear? Yes. Yes, sir. अच्छा, अब इसकी एक और version है, and that version is कि you're going to have 3 pairs, but there will be 2 bonded pairs plus 1 lone pair. यानी है टोटल अभी भी 3 ही. ठीक है? The only difference is कि one of them is not bonded. It's a lone pair. ठीक है? One of them is not bonded. It's a lone pair. ये इसका पार्ट बी कर लेते हैं, सेकंड वर्जन. उसमें वो सल्फर डाइऑक्साइड फिट होता है. सल्फर डाइऑक्साइड के ना, it's got 2 bonded pairs. लेकिन if you look at sulfur's electronic configuration, तो out of 6, group 6, 4 are bonded and there is a lone pair left. तो total pairs कितने हो गए? It's bonded pair, and then there is a lone pair. तो अब शेप तो वही होगी. It's exactly the same shape except कि there is, I mean, इस साइड पे it's like a fan with one blade missing, but it still looks like a fan. लेकिन उस साइड पे there is no atom on that side. There's no atom on that side, so that means that side is missing. तो ये उसी तरह के फैन का ना, एक you just remove one blade of the fan, so that's it. ठीक है? So this shape is just known as bent. ये रह गया ना पीछे, that's it. So the name of the shape is bent. Otherwise, remember, the shape is exactly the same. So bent or non-linear. It's the same fan, but one side is missing. You have the electrons, but there's no atom on that side. ठीक है? ये clear है? Yes, sir. Yes, sir. और इसका जो एंगल होगा, would it be greater than 120 or less than 120? मैंने क्या कहा Less था? than 120. हाँ, क्यों मैंने कहा था लोन पेयर की जो रिपल्शन होती है, that's slightly greater because the lone pair is closer to the atom, right? So the angle will become slightly less than 120. So the angle in this case would be 117 to 119 degrees. ठीक है? Is this clear? ठीक है सर. अच्छा, अब आ जाओ next scenario. Scenario number 3. What if you have 4 bonded pairs? और उसका भी ना पहली वर्जन. अच्छा, वो आपके पास है, that's CH4. ठीक है? Remember 4 bonds. So
bonds are going to stay as far away from each other as possible. इस शेप का किसी को नाम पता है? Tetrahedral. हाँ, this is three-dimensional tetrahedral and the angle is 109.5 degrees. ठीक है, ये जो बॉन्ड है ना वेज शेप दैट्स कमिंग टुवर्ड्स यू, द डॉटेड इज गोइंग अवे फ्रॉम यू। इसकी भी शेप दिखा देते हैं कि CH4 का मॉलिक्यूलर मॉडल दैट्स ये बना हुआ है। ठीक है, रिमेंबर इट्स थ्री डिमेंशनल। वन बॉन्ड इज कमिंग टुवर्ड्स यू, वो एक डॉटेड जो है ना दैट्स गोइंग अवे फ्रॉम यू, वन इज गोइंग अपवर्ड्स, वन इज गोइंग टू द लेफ्ट। ठीक है, सो दैट इज व्हाट टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट लुक्स लाइक। ठीक है, एक आगे आ रहा है आपकी तरफ, वन इज गोइंग बिहाइंड, सो इट्स अ थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट। और इसको इमेजिन करें इट्स लाइक अ पिरामिड with one bond sticking to the top of the pyramid. And remember, it's a symmetric shape. Symmetric का मतलब इसको even if you turn it around, उसको उल्टा भी कर दो, it looks exactly the same. ठीक है, it's still, अगर इसको साइड से देखोगे ना, like if you turn it sideways, so there's a pyramid over here, and there's one bond sticking on top of it. ठीक है, तो no matter which side you look at it, it looks exactly the same. इसको कहते हैं रोटेशनल सिमेट्री। कुछ चीजें होती है उनको घुमा के भी देखो ना, दे लुक एग्जैक्टली द सेम। So this is one thing. It's rotationally symmetric. I mean, no matter how you rotate it, it looks exactly the same. ठीक है, ये क्लियर है? टेट्राहेड्रल। यस सर। सर इसको क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल। ठीक है सर। ठीक है, और एंगल जो है ना वो 109.5 डिग्री है। ठीक है, अब इसकी फर्दर वर्जन है। ठीक है, बी फर्दर वर्जन, ये सारी याद रखना बड़ा मुश्किल काम है, ये मतलब याद रखनी होंगे। ठीक है, ये आपने क्या कहा था, डॉटेड पीछे जा रहा है हाँ, कि डॉटेड दूसरा वाला भी? डॉटेड इनटू द पेज, और वो जो वेज है ना दैट्स कमिंग आउट ऑफ द पेज टुवर्ड्स यू। जैसा ये नहीं है, ये वाला आपकी तरफ आ रहा है ना, तो दिस इज द वेज शेप्ड। वो जो ओके। वो एक पीछे जा रहा है वो दैट्स द डॉटेड, एक ऊपर जा रहा है और एक राइट पे जा रहा है, साइड वेज जा रहा है। ठीक है, अब इसकी फर्दर वर्जन है कि यू कुड हैव थ्री बॉन्डेड पेयर्स एंड अ लोन पेयर। है अभी भी चार ही, बट वन ऑफ देम इज अ लोन पेयर। उसका उसका जो एग्जांपल है ना दैट्स अमोनिया। अमोनिया में क्या होता है कि अमोनिया इज मेकिंग थ्री बॉन्ड्स, या उसको पूरा एग्जैक्टली ड्रॉ कर लेते हैं, तो अमोनिया इज गोइंग टू लुक एग्जैक्टली द सेम, एक्सेप्ट अमोनिया जो है ना वो जो नीचे वाला पिरामिड नहीं है, अमोनिया जस्ट मेक्स दैट। N was, remember, group 5. It makes three bonds, so there are two electrons left. तो इशू ये कि अभी भी ना इट हैज पेयर्स तो फोर ही हैं। ठीक है, सो इट्स एग्जैक्टली द सेम, मतलब यहाँ पे ना, ठीक है, देर फोर साइड्स, देर थ्री बॉन्डेड पेयर्स एंड वन लोन पेयर, राइट? सो इट स्टिल हैज द सेम फोर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक द सेम वन। ठीक है, CH4 की तरह, एक्सेप्ट कि वो जो लोन पेयर है ना इट्स नॉट बॉन्डेड टू एनीथिंग, तो वो ऊपर देयर इज नथिंग ऑन टॉप ऑफ इट, राइट? तो इमेजिन कि आप CH4 में से ना ऊपर वाला जो बॉन्ड है ना ये उड़ा दो। ठीक है, दैट्स नॉट देयर, तो इंस्टेड यू हैव अ लोन पेयर, सो सो यू हैव एग्जैक्टली द सेम अरेंजमेंट बट विद वन साइड मिसिंग। तो दिस इज नोन एज ट्राइगोनल पिरामिडल, क्योंकि यू वोंट कॉल इट टेट्राहेड्रल हेड्रल नाउ। ठीक है, ये क्लियर है? दिस इज ट्राइगोनल पिरामिडल।
और इसका एंगल जो है ना वो थोड़ा छोटा हो जाता है, क्योंकि लोन पेयर की मैंने कहा था रिपल्शन ऑफ अ लोन पेयर इज स्लाइटली ग्रेटर, सो द एंगल नाउ इज 107 डिग्रीज। जैसा उसमें नहीं हुआ था, लोन पेयर आ गया था, रिपल्शन थोड़ी ज्यादा हो गई थी, ठीक है। तो द एंगल इज 107 डिग्रीज। तो क्लियर है, सेम शेप, एग्जैक्टली सेम शेप, बट विद द टॉप मिसिंग। चलिए, ये क्लियर है। जी ठीक है सर। सर। जी सर। बस अभी चार पांच और रहती हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं और फिर देखेंगे इसका करना क्या है, ठीक है, वंस वी नो के। ये 4-5 और भी हैं। हाँ, ये है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। बिस्मिल्लाह, ठीक है सर जी। तो कॉमन इसमें यही है, जितनी हमने यहाँ तक पढ़ी है ना, दीज आर द कॉमन वंस, ठीक है। ज्यादातर मॉलिक्यूल में 5 बॉन्ड्स नहीं होते, 6 नहीं होते, तो उनकी शेप्स इतनी कॉमन नहीं होती, लेकिन वो पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। चले, ठीक है। कल सर ये प्लीज भेज देंगे ग्रुप में। मैं भेज देता हूँ फिर। जी थैंक यू सो मच सर। ओके सर। चलो, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।